Anurag Bera, you just give me a moment. Anurag. Anubhav, sorry. Anmol, you gone? Keep your camera on. Anmol Sachdeva. Okay, that's a question from him. Maybe you can answer. So what, see, if you see the real problem behind something, अभी आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि heaviness, you're defining it in terms of heaviness. So what is the problem? What is the dynamic problem? When you do an activity, then you feel difficulty, isn't it? आप पुश करते हैं ज्यादा अपने आप को तो डिफिकल्टी होती है, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो डिफिकल्टी होती है, कोई भारी सामान उठाएंगे तो डिफिकल्टी होगा, isn't it? तो आप पहले उसको सही तरीके से डिफाइन कीजिए, प्रॉब्लम क्या है। आपको पुश करने में तकलीफ आ रही है, अपने आप को जोर लगाने में तकलीफ आ रही है, किसी भी तरीके का जोर लगाने में तकलीफ आ रही है, यस और नो। देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इफ यू डू नॉट गेट अ हिंट ऑफ सोल्यूशन देन वी हैव फेल्ड। आपको अंग्रेजी के वर्ड या हम अगर नॉर्थ इंडियन है तो अगर तमिल के वर्ड आपको बताएं तो उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। तो आपको पूरा का पूरा एलोपैथी कुछ ऐसे शब्द बता देता है, आप उसी के चारों ओर घूमते रह जाते हो। आप सभी समझदार हैं, यू आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल एंड यू कैन रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम, बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा, बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा। इफ यू नो व्हाई इट इज हैपनिंग और व्हाट इज कॉजिंग इट, क्या कर रहा है ये प्रॉब्लम, उसको अगर ठीक कर देंगे ठीक हो जाएगा, आप भी समझ सकते हैं। अच्छा, आप उन लोग के पास में जा रहे हैं जिनकी वजह से दुनिया में हार्ट डिजीज बढ़ रहा, यू आर गोइंग टू दोज पीपल ना। एक भी ठीक हुआ है हार्ट डिजीज पेशेंट, एक भी ठीक हुआ है जो निकल गया वो अपने हार्ट की वीकनेस से, कोई भी हुआ है 100 साल के विद इन। मैं आपको एक विंडो दे रहा हूं ना 100 ईयर्स का, एक भी इंसान का हार्ट दवाई खा के मजबूत नहीं हुआ। देर इज नो एविडेंस इन द लास्ट 100 ईयर्स, और क्या 100 साल वेट करेंगे आप। फर्स्ट डिफाइन प्रॉब्लम क्लियरली। आपको जोर लगाने में तकलीफ हो रही, वो तो स्कैन करके अगर अंदर देख रहे हैं तो फिर एलवीएच निकल रहा है किसी का, किसी का हार्ट में सूजन निकल रहा है या इस तरीके की चीज निकल रही है ना। बट आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, जोर लगाने में तकलीफ आ रही है, क्लियर कट। जोर कैसे लगाते हो, हाउ डू यू मेक एफर्ट, लेट्स कम टू दिस। हाउ डू यू मेक एफर्ट, हाउ डू यू मेक एफर्ट, जोर कैसे लगाते हो, सांस रोक के ही लगाते हैं ना। कोई और तरीका है जोर लगाने का, बता दीजिए, हम छोड़ देंगे, प्रोग्राम करना ही छोड़ देंगे। आपको जिन लोगों ने जितनी कहानियां सुनाई है उसने एक भी मरीज को ठीक नहीं किया है। बट आपको अंग्रेजी बोल के थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि गुलामी छाई हुई है 200 साल की। A bit of English. Somebody is requesting. So just have a little word of English which your doctor says and you are happy with it. No, where in the world medicine has created a solution for heart disease. Heart disease has become the number one cause of death. So what is the problem? If you define the problem properly, you also know how to come out of it. When you push yourself, when you make effort, what happens? It is difficult for you to make an effort. So I'm saying, how do you make effort? You always hold your breath and make an effort. So where does the problem lie? Your breath hold capacity is weak. Yes or no? कैन यू अंडरस्टैंड इट? क्या आप लोग समझदार, बहुत समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, प्रॉब्लम यही है, पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते। तो लेकिन अपने विजडम से सोचिए, जस्ट थिंक फ्रॉम योर कॉमन सेंस विजडम। व्हेन यू पुश योर सेल्फ टू वॉट एवर, वेन यू मेक एफर्ट, जब आप जोर लगाते हैं then it feels difficulty. That means your breath hold capacity is weak. What is the solution then? आप मुझे बताओ ना, मैं आपको क्यों बताऊं, आप ही बताओ, आप ज्यादा समझदार हो मुझसे, यू आर मोर इंटेलिजेंट देन मी। जब सांस रोकने की कैपेसिटी कम हो गई है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, व्हाट हैज टू बी इंक्रीज इफ योर ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी इज वीक, इट हैज टू बी इंक्रीज्ड। सो
What we are teaching is a part of Ayurveda, which got lost. Ayurveda, Kumbhak is a part of Ayurveda. It is also a part of Rig Veda. It is the strength of Rig Veda. Upaveda of Rig Veda is Ayurveda. Kumbhak is Ayurveda. 92% of Ayurveda is lost. And we are trying to revive it. And you will see solution. It is not that will not give you, you will not come out of this. I am saying you will come out of all these heart problems. Now, something which can correct your heart, you are doubting that somebody who has not given a result in last 100 years, you all go to that place, spend your time, and you don't even say कि पैसा तो ज्यादा ले रहे हो डॉक्टर साहब, हमको मारने के पैसे तो ज्यादा हैं. So everything that is the current treatment protocol of heart is killing you. So अपने को मारने के पैसे दें, आपको शौक है, आपकी मर्जी, हम वो भी मना नहीं कर रहे, जाओ. मगर कुंभक बचा लेगा आपको, हार्ट अटैक से बचा लेगा. बचना चाहते हो तो यहां पे करिए, नहीं तो फिर, है ना, टाइम टाइम पास करने के तो और भी जगह है. तो आपको क्यों प्रॉब्लम आ रही है? मैं और टेक्निकल बोलूं आपको? शुड आई से अ लिटिल, become a little technical? You'll not understand. See, it's very, very practical. So there is a strength in your body which is called as Dakshin Bala. Now, if this Dakshin Bala becomes weak, your heart will become weak. Not only this, I'll connect it with something. किसी चीज के साथ में मैं connect कर रहा हूं आपको. Your doctors are not even doing that. In today's time, miscarriages are happening a lot. And the main cause of miscarriage is the heartbeat hasn't happened. It's a disaster for humankind. So, how will the heartbeat happen? Or how does it happen? Now, I'm giving you a formula, simple formula, but it's a hack. I'm just telling you one part of the whole game. It will not help you. In fact, it can create a difficulty. That's why we say we don't teach something online. We diagnose you and then give you a customized practice, and we customize the whole thing according to your problem. So, if you're inhaling, if you are inhaling for a certain amount of time, suppose you can inhale for 10 seconds long, your ability to hold it for 4 times more than it, minimum 4 times more than it, is Dakshin Bala. Now you all have a weak Dakshin Bala. Now compare it with the past generation. 3 generations back, nobody had a heart problem. 3 generations back, nobody had a heart problem. Now, if you compare their life with your life, their body, if you even remember your grandfather, grandmother, the kind of work they could do with their body, the kind of effort they could make with their body, you are not even 10% of that. You are not even 10% of that. So by change in whatever lifestyle, we created a weakness in our body. Now, because who were ruling us for the last 400 years, who were the people who were ruling the world? The dumbest people in the history of humankind. The Firangis were ruling the whole world. They have destroyed not just the environment, not just everything else, the resources of earth. They have destroyed human body. Allopathy is the biggest colonization of all times humankind has ever seen. And it's very simple to get it. Your grandfather, grandmother, they had a more effort-making capability. Now, if you have lost that effort-making capability because of whatever, is it not our responsibility to enhance it, to increase it, to
Create a lifestyle where your effort making ability enhances. Kumbhak is the methodology through which you make effort. So Kumbhak has to enter everybody's life, otherwise you can't stop heart attack. You can't stop miscarriages. No medicine can improve your heart strength. No food can improve your heart strength. Are we not, do we not have the common sense enough to understand that no food, no medicine, Ayurvedic or otherwise chemical, can increase strength factors of your body? No. And if you have a weak heart, doing an exercise can cause heart attack. Have you seen examples of people who were playing badminton, doing weight exercise, and got into heart collapse? Kumbhak is something that you can do sitting and improve the heart strength. And after a certain period of Kumbhak, you can take leverage with your body. You do whatever exercise, you'll not get into heart attack. It's very simple to understand. And you are intelligent people. Please use your wisdom. Where the problem lies, you are not able to hold your breath for a certain, your holding capacity has come down. How will you come out of the problem? Increase the holding capacity. As straightforward as this. Swamiji, we have young Anmol with us. He's the one who is prone to anxiety and heart is heart feels heavy. So could you just have a look at him? हाँ, वो तो मतलब जो क्वेश्चन था वो तो इन्हीं का मेरे ख्याल से क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो दक्षिण वर्ग बहुत कमजोर है ना। योर एक और चीज बताओ, योर समान ना, इफ आई स्टार्ट टॉकिंग समथिंग टेक्निकल विच यू डोंट नो, बट आसानी से बता दिया ना, योर एफर्ट मेकिंग एबिलिटी इज लेस, ये आसानी से ठीक हो जाएगा। बट सी, एवरीबडीज प्रॉब्लम हैज अ मोमेंटम। डिजीज का एक मोमेंटम होता है, वीकनेस का एक मोमेंटम होता है। सो उसके अगेंस्ट में आपको काम करना पड़ेगा। आई व्हाट इज द फर्स्ट फर्स्ट नियम सूत्र ऑफ आयुर्वेदा? यथा बलम तथा चिकित्सा। द फर्स्ट सूत्र ऑफ आयुर्वेदा इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी कैन ट्रीट यू। सो देर इज अ स्ट्रेंथ ऑफ डिजीज ऑल्सो, डिजीज, रोग बल। सो इफ यू, with your strength, if you just oppose the roga bala, and for that you will have to increase your body strength. Now strength is always related with Kumbhak. There is a Shiva Parvati Samvad where Parvati asks, Kim Balam Sarva Balam? What is the strength of the whole living world? And Mahadeva answers, Kumbhak Balam Sarva Balam. So body strength is Kumbhak. You have to do this Kumbhak. And in your case, I see a 6-month practice can get you out of this. है ना? People will have to spend different amount of time. For some people, 1 month, they'll feel drastic change. For some people, 6 months. For some people, it might be more, 1 year or 2 year, depending upon the roga bala. But first line treatment for any heart disease is Kumbhak. First line treatment is Kumbhak. Rest is not treatment, it is support. Surgery is not treatment, surgery is management, a little management. Medicine is not treatment. Medicine is support for your body. So if something is working against your body, like allopathic medicine, which is always working against the body, it has increased heart attacks in the world. But apart from allopathy, even Ayurvedic medicine are support. They are not treatment. They will help your body to recover. But recovery will only happen through your body strength. Recovery strength. Sonal ji, would you, if I put you in spotlight, you are okay with that? Yeah, so I'll ask you to unmute yourself. I hope I mean, not hope, I believe you're suffering from BP or heart condition and you're looking for a solution. So if you could quickly tell about yourself, unmute yourself. Could you unmute me? Yeah. Can you Yes. hear me? Yeah, Yes. go ahead, go ahead. Anji, namaste, Swamiji, namaste. Namaste. All right, Namaste. so I was diagnosed with blood pressure, high blood pressure in June this year. And as usual, I have been put on medication that I'm not comfortable taking.
And before this thing gets any worse or any further, I would like to, adopt a natural therapy, a natural way to look at this, maintain it, and have a more active life. Yes, So, and I'm very much into natural processes. Yes, okay. thank you. So, what is your problem? Your problem is apana dosha. Now, what is apana dosha? Your inhaling strength is weak. Now, apana dosha is also connected with water element of your body. So, if the water element of body is not proper, there will be dry, and the body will start drying up. Moreover, what happens if you take allopathic medicine for blood pressure control? Most of the medicine are combined with diuretic, hydrochlorothiazide, losartan, tozar, ripase, losartan potassium, telmisartan potassium. Now, what it does, it just reduces the volume of your blood by throwing out water. So it is diuretic. So what is happening? First of all, your strength of your heart is dependent upon the water holding capacity of your body. Now, let's please get it clear. Now, how do you know that this is true? If you have got into dehydration at some point of time in your life, सभी को लूज मोशन कभी हुआ होगा ना कभी लूज मोशन हुआ होगा द मोमेंट यू लूज वाटर यू start feeling the thumping of your heart. And most of the people will recognize this. Yes, this happens. So the moment your body loses water, it impacts your heart immediately. Now you are consciously removing water because there is a fashion of some number. You are into fashion. See, your blood pressure, what you call as blood pressure, according to science, there is nothing called as blood pressure. Science says a laminar flow cannot exert a vertical pressure. Doctor says blood का pressure artery पे होता ही नहीं है. या तो साइंस गलत है या तो आपका डॉक्टर गलत है. दो ही चीज हो सकता है. साइंस गलत हो नहीं सकता बिकॉज साइंस कैन बिल्ड टेक्नोलॉजी आउट ऑफ इट. साइंस गलत नहीं हो सकता क्योंकि साइंस ने उसी चीज के ऊपर टेक्नोलॉजी बिल्ड किया. तो आपका डॉक्टर गलत हो सकता पर उसको बोलेगा कौन गलत? जब सारी दुनिया एक ही बात बोल रही है तो आप तो बहुत माइनॉरिटी हो गए ना. आप माइनॉरिटी हो गए तो आप कैसे बोलोगे? क्योंकि आप सच भी बोलोगे तो मार देंगे वो. बर्नौलीज प्रिंसिपल जाके आप गूगल करो. सबके पास में गूगल है आजकल. इंफॉर्मेशन है सबके पास में. इंफॉर्मेशन है. बट देन व्हाट कम्स इन द अगर हम वो ब्लड प्रेशर इक्विपमेंट में कुछ क्या नंबर आता है दैट इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर. आप ब्लड को प्रेशर दबाते हो क्या पट्टा बांध के? ये मसल्स को नहीं दबाते आप. टिश्यूज को नहीं दबाते आप. केवल ब्लड को दबा रहे हो ना. ऐसा तो हो ही नहीं सकता. नॉट पॉसिबल. सो व्हाट प्रेशर इट इज मेजरिंग? ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कर रहा है. आपके टिश्यू का प्रेशर मेजर कर रहा है. उसको ब्लड प्रेशर बोल रहे हो. यस इट हैज ऑल्सो अ कोरिलेशन. हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि इन दोनों का कोरिलेशन भी है. बट आप ब्लड प्रेशर क्यों कह रहे हो उसको? तो पहली बात तो ब्लड प्रेशर जैसा कुछ होता ही नहीं. दूसरी बात सेकेंड थिंग ब्लड प्रेशर इज प्रोटेक्टिव फॉर यू. If the transport mechanism is weak in your body, then your body will increase the blood pressure to transport more. Third thing, blood pressure is protective because it is a part of protective mechanism of your body or the immune system. अगर immune system activate हो रहा है इसका मतलब risk है body में. तो it is protective. By lowering down the blood pressure, you are actually damaging your body. मैं ऐसे कितनी सारी बातें बता सकता हूं जो कि आपको बिल्कुल 100% लॉजिकल लगेगा. इट इज ट्रूथ. सो अपान दोष यानी कि इनहेलिंग कैपेसिटी कम है. इनहेलिंग कैपेसिटी कम है. कैसे पता चलेगा इनहेलिंग कैपेसिटी और अपान दोष है? अब ट्राई करके देखो. इनहेल होल्ड एक्सेल होल्ड इन सबको अलग अलग बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे ना पता चलेगा कि द इनहेलिंग कैपेसिटी इज वीक. एंड इट ऑल्सो शोज अप कि बॉडी में भी ड्राइनेस आता है. दूसरा फिर देन इफ यू टेक एनी ब्लड प्रेशर मेडिसिन देन व्हाट विल हैपन? यू आर फर्दर डैमेजिंग द जी, बॉडी. यू आर फर्दर डैमेजिंग द बॉडी. हाँ I have one question, Swamiji. हाँ हाँ. Uh,
I do get a lot of headaches and dizziness because of this. So there Hmm. is some relation, right? There There has to is be a relation. something that Yes, is yes, yes, connected. yes. तो हाँ जी, हेडेक भी जब अपान दोष कम होगा ना, मतलब वीक होगा, तो अपान इज फ्लो फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड. प्लीज अंडर देखो, आप बहुत आसानी से समझ सकते. If you understand, you also know how to come out of it. But taking up painkiller can get you to cancer. पैरासिटामोल सबके घर में पड़ा है ना, सबके घर में होगा. right. विथ सम पेन किलर, एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, निमुसुलाइड, आइबुप्रोफेन, और फलाना ढिमकाना, नाम देखो कैसे. मैं भी रट के आया हूं ताकि आपको भी लगे मैं भी समझदार हूं. सो देर इज अ फ्लो फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड. है ना, आप खाते हैं तो नीचे जाना चाहिए ना, ऊपर नहीं आना चाहिए. नापान दोष में व्हाट विल हैपन, द फ्लो फैक्टर डाउनवर्ड्स विल बी वीक. तो ऐसे लोगों में क्या क्या आएगा? एसिड रिफ्लक्स, थिंग्स कमिंग आउट, भूख कम लगेगी. सो व्हेन थिंग्स डजंट गो डाउनवर्ड प्रॉपरली, व्हाट विल योर बॉडी डू? योर बॉडी विल, आप सोचो ना जरा, चाय की छन्नी में मलाई जम गई, अब चाय नहीं छन रहा, आप क्या करोगे? यूल पुट प्रेशर, यूल पुट प्रेशर फ्रॉम अबव. If you are drinking a juice and a pulp gets stuck in the straw, what do? You create a pressure. So if something is getting stuck in your body will increase pressure. Is it a disease or a protective mechanism? It's protection. Now you want to get it down. So are you helping your body or doing a crime? If you do a crime, the condition of the body, not only just your body, but the body of the whole humanity will get into trouble. Is there a proof? Yes. See the number of people dying because of heart attack. How many people are getting into blood pressure issues? It is not because your body cannot handle itself. It is because you are not letting the body handle itself by taking some kind of a pill. क्या इतनी बात समझ आ रही है आपको? If your body is trying to protect itself, तो अब कहते हैं ऊपर से नीचे वायु जा रहा है, तो ऊपर नीचे नहीं जा रहा, ऊपर आ रहा है. तो what will happen? What will happen? It will first become a gulma, goal, a condition for tumor, some kind of a cyst, ulcerative condition. And after a certain period of time, it will impact the head. Headache, heaviness in the head, migraine, glaucoma, and what else? What is gulma? It's a tumor. It's a tumor. Now you're not helping your body correct itself. You are either taking a ranitidine, OCID, some kind of a that uh, which will give you a certain time relief for a certain period of time, or you are taking a painkiller. Now painkiller always works by inhibiting prostaglandin in your body, which is a growth factor. If you inhibit the growth factor, everybody is going to get cancer. Cancer is increasing at the rate of 12%. Not because the human body has a tendency to get into cancer, because we are creating cancer. We are creating heart disease. सबसे मूर्ख के अंदर उनके गुलाम ना महामूर्ख ही होंगे, समझदार तो नहीं हो सकते. फिरंगियों के गुलाम तो महामूर्ख ही होंगे. मगर एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? चलो वो भी कर लेते, कर लो गुलामी, मगर एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ. नॉट गुड. सो वी डोंट टेल यू टू स्टॉप एनीथिंग. ठीक है, आप समझदार बनिए, आप समझो पहले. ऊपर से नीचे अपान दोष, ऊपर से नीचे चीजें नहीं जा रही, फ्लो फैक्टर वीक है. सो आई कैन कनेक्ट इट विथ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो. In you, I have said apana dosha, but in other people, there can be apana dosha and can be a different problem, like thyroid. If the flow factor is not proper in your body, that is called as thyroid. By taking a thyroxine, you're not helping yourself. Nobody has come out of thyroid in the last 50 years by taking a pill. And 30 years back,
Have you heard of thyroid? Or 20 years back, have you heard of thyroid? No. Now, it is becoming an epidemic. Diabetes. Because we can't even define why the problem is. Allopathy doesn't even know why diabetes happens, why blood pressure happens, why heart disease, why thyroid, why autoimmune disorder, why cancer. They don't know anything about any disease. 80% of total disease, apart from infection, 80% of disease are chronic in nature. That is, it has come from within yourself, some kind of a weakness. And allopathy doesn't know the reason for even a single disease. And they are treating everybody in the world across. मतलब आप लोग सोचो ना, जिसको मालूम ही नहीं है कि इसको ये बीमारी क्या है, क्यों हो गया, वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं. जिनको मालूम ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या होता है, वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं दुनिया में. और उन्होंने बाकी सभी ऑल्टरनेट को मार दिया. दे किल्ड एवरी अदर ऑल्टरनेट. आप गूगल करके देख लो, किसी भी डिजीज का कारण नहीं मालूम. अभी मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं ये अपान दोष है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर भी आपका दिमाग नहीं चलेगा, क्योंकि यू हैव बीन ट्रेन्ड इनटू समथिंग एल्स. जबकि ये आसान है समझना. एवरीबडी कैन गेट दीज थिंग्स एंड कैन अंडरस्टैंड, और फिर ठीक कर सकते हो. सिंपल चीज आपके लिए, सिंपल चीज, नमक आपके लिए काम कर जाएगा. मगर नमक आपको खिलाएंगे नहीं, क्योंकि बोलेंगे ब्लड प्रेशर. आप नमक से ठीक हो जाओगे, क्योंकि नमक भेदक है, ऊपर से नीचे जाने में हेल्प करेगा. इट विल हैपन. अगर वो ऊपर से नीचे ट्रांसपोर्टेशन ठीक हो रहा है, ब्लड प्रेशर विल लोअर डाउन. मगर लो डाउन करने पे फिर तो आपका फायदा क्या? आप ठीक हो जाएंगे तो फायदा क्या आपका? तो आपने बॉन्ड भरा था ना, जब आप पैदा हुए थे उससे पहले भगवान के घर में जाके बॉन्ड भरा था कि अपनी गाड़ी कमाई फिरंगियों को दोगे, फार्मा कंपनियों को अपनी गाड़ी कमाई देना ही देना है. तो बॉन्ड, कागज तो ढूंढो, मिलेगा कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना. लेके तो आए होंगे दुनिया में वो कागज, बॉन्ड. ठीक नहीं हो रहा कोई भी, उसके बाद भी वही वही कर रहे हैं. तो इसका मतलब तो बॉन्ड पक्का भरा है आपने. There's a question about diastolic. Mera BP is going 170 by 120. This is from Bhataranu Das. Age 37 है. So diastolic कम नहीं हो रहा है. हाँ हाँ. मेडिसिन तो भी ले रहा हूं. एक चीज, हाँ, पहली बात ये समझिए, आपको प्रॉब्लम कब है? जब बॉडी में प्रॉब्लम आ रहा है. ब्लड प्रेशर कुछ भी हो, अगर आपको तकलीफ नहीं है, आई हैव सीन पीपल 240/100, नो प्रॉब्लम. प्रॉब्लम नहीं है तो आपको डिजीज नहीं है, ये भी समझो. इफ योर बॉडी कैन हैंडल 240/300, तो यू आर स्ट्रांग पर्सन ना. उसको वीक क्यों बनाना चाहते हैं? इफ यू आर एबल टू हैंडल लार्जर, व्हाट यू से, पैरेलल लाइंस, अ ग्रेटर विंडो, है ना, 240, it also goes to 240, it also comes down to 120. If a person is like that, so his body is more resilient, in fact, isn't it? If you can't handle a little fluctuation, your body is very weak. If you can handle fluctuation, you are more tolerant and resilient. If you can't handle fluctuation, you are weak. By controlling the blood pressure, everybody is trying to make you weak. Now, if you do Kumbhak, you will be able to tolerate any kind of fluctuation. The question is, do you want it? Or do you want to become weak because you have an idea that I should have this much blood pressure? Now, this is the first part. Having said it, there are people who will get into problem because of fluctuation, because of the weakness of the body. Now, diastolic ज़्यादा है, it is more. What does it mean? The relaxation factor is weak. Your body cannot relax properly. Systolic is contraction of heart, diastolic is relaxation of. So diastolic means your relaxation factor is weak. What does it also mean? The exhaling capacity is weak. If the diastolic is weak, your exhaling capacity is weak.
You are not able to relax your body. Your detox capacity is weak. Your detox capacity is weak. In those kind of people, what will happen? There will be a frequent adrenal influx in the body, adrenal activity, anxiety, fear, negativity about looking into future, those kind of things. If your relaxation factor is weak, there will be a lot of thoughts in the mind. The person will not be able to sleep properly, will not have a sound and a deep sleep. So relaxation factor. Relaxation factor अगर कमजोर है, that means now I'm giving you a practical correlation. Exhaling capacity is weak. How to enhance exhaling capacity? How to enhance exhaling capacity? These kind of people, if they will just sit down with exhalation, squat with exhalation, and slowly inhale and come up, it will help. It will increase the exhale. Slowly come down, squat in a position with slow exhalation, and then hold a little, and then come up very slow. So it is not by exhaling more you will increase the exhaling capacity. It is with the hold factor after inhalation which will increase your exhaling capacity. So the whole program is designed in that manner. I'm just telling you one part of it. Takes a lot to actually design a module. A lot of things has to be looked into. So how will the diastolic become fine? See, one thing, having said that diastolic strength or the exhaling capacity increases, does your body really want to decrease the diastolic number? That is also a factor to be looked into, and what time your body will get into that state where it will lower down the diastolic. The moment you start Kumbhak, what I am saying is the moment you start Kumbhak, the difficulty which you get because of a certain number of diastolic, it'll vanish. So instead of looking at number, if we say, just forget the number, the trouble that you have because of that number, it will go off. This is the first thing that will go off. The difficulty it is causing to your body, it will go off. And you will not get into further into any damage or the future risk. If I say the future risk will drastically come down, your prognosis will become better. Your prognosis with controlling the blood pressure or some kind tachycardia, bradycardia, by controlling it doesn't become better. That is what your doctor say. इसको कंट्रोल करके रखो तो आगे डिफिकल्टी नहीं आएगी, पर आगे तो हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं. प्रोग्नोसिस कंट्रोल करने से नहीं होता बेटा. प्रोग्नोसिस आपकी बॉडी का वो जो वीकनेस है उसको ठीक करने से बेटर होता. Swamiji, what could be the reason for continuous dizziness and pressure on the right side of the neck? Mugdha has this question. Dizziness, once again, when the pressure ecosystem of your body is weak, which has become weak in 2 generations, as I have told you, the effort making capacity of your body has gone down. So if the pressure ecosystem of your body has become weak, anything which runs because of pressure, anything which happens owing to pressure. One other thing which happens owing to because of pressure is your hearing capacity. Another thing that happens because of pressure is your balancing capacity. So when the pressure system is weak, the body will try to raise it. Maybe you are not supporting the body to raise it.
It will come down, again come up, come down, again come up. There will be a fluctuating pressure ecosystem in your body. The fluctuating ecosystem, a pressure ecosystem of your body can cause what? Dizziness. Can cause what? Tinnitus, sounds in the ear, fluctuations of sound in the ear, heaviness in the head, heaviness at the backside of head, because the hypothalamus also plays a role of controlling the temperature, the thermal ecosystem of your body, and it also happens because of pressure. The thermal ecosystem of your body also gets controlled because of pressure. If you increase the pressure, the temperature increases. So your thermal ecosystem or the temperature regulation of your body happens because of pressure, and it happens at hypothalamus, the hind brain, below which there is called as hypothalamus. And pituitary insufficiency is something which is common across humanity, across the globe. Most of your disease is because of pituitary insufficiency. You say इंसुलिन मेरे शरीर में निकल नहीं रहा, बट इंसुलिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं निकल रहा ना, विच कम्स फ्रॉम पिट्यूटरी. मेरे में थायराइड का इश्यू है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव टीएसएच इश्यूज विच कम्स फ्रॉम पिट्यूटरी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो पिट्यूटरी इनसफिशिएंसी बहुत लोगों में हो रहा है, हम इसको देख ही नहीं रहे. दैट इज व्हाट आई से. अभी जो एलोपैथिक डिस्पेंसेशन है, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनी डिजीज, एनी क्रॉनिक डिजीज, उनको मालूम ही नहीं है. तो प्रेशर इकोसिस्टम आप ठीक करेंगे तो ही थर्मल इकोसिस्टम भी ठीक होगा. द प्रेशर इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज वात इन आयुर्वेदा. द प्रेशर इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज वात इन आयुर्वेदा. द थर्मल इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज पित्त इन आयुर्वेदा. द टेम्परेचर एंड प्रेशर, यही दो चीज है जो आपके शरीर में मटेरियल मैनेजमेंट करता है. अक्रॉस द यूनिवर्स टेम्परेचर एंड प्रेशर फंक्शंस एज द मैनेजर ऑफ एनीथिंग सॉलिड और मटेरियल. उसको कफ कहते हैं आयुर्वेद. तो प्रेशर इकोसिस्टम अगर खराब हो गया तो उसको ठीक तो करना ही पड़ेगा ना. कैसे करोगे? प्रेशर को कम करके, ज्यादा करके, जबरदस्ती करके नहीं. यू इंप्रूव द प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ योर बॉडी, विच मेडिसिन कैन नॉट डू, विच फूड कैन नॉट डू. भोजन तो पचता है तभी एनर्जी मिलती है ना, मगर पचाने का काम तो आपका शरीर करता है. स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी, द स्ट्रेंथ ऑफ मेटाबॉलिज्म. भोजन से कोई एनर्जी पाके सुपरमैन तो नहीं बनना. 50-year person, for 50 years the person has taken food, he has not become a superman. So food makes you weak. There is enough proof. 80-year person, he has become more weak. So if you do not improve the metabolic capacity of your body, which is again connected with the pressure ecosystem, प्रेशर, टेम्परेचर, मटेरियल, तीन चीज है. वात पित्त कफ. वात पित्त, वात कंट्रोल्स पित्त एंड कफ ऑल्सो. पित्त कंट्रोल्स कफ. तो वात इज कंट्रोल्ड बाय कुंभक. You can't control Vata by any other mean. By supporting your body from outside, you'll just use body's own strength to control Vata. But वो strength तो बढ़ाओ ना. तो क्या ऐसे समझ में, प्रेशर से ही बैलेंस बनता है. यू हियर बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज देर इज अ प्रेशर सिस्टम इन योर ईयर. नाउ इफ प्रेशर फ्लक्चुएट्स, you'll hear sounds which is not happening. You'll have a difficulty in hearing. You'll have dizziness because the controlling factor or balancing factor of your body is conducted through a pressure a mechanism, cochlea within your ear. तो प्रेशर ठीक करना पड़ेगा. कोई और तरीका है? डिजीनेस हो रहा है तो वो गोली खा लो डिजीनेस वाली. विल इट गेट योर प्रेशर करेक्टेड? नो, नॉट एट ऑल. It is not treatment. Any medicine is not treatment. It is management. You can use it for a short period of time, but then you are damaging the body also. So even if you take a medicine for a short period of time, if you are doing Kumbhak, the side effect will be less. उस पे भी कुंभक करना चाहिए. Kumbhak is the first line treatment for any kind of blood pressure and heart disease, heart problem, many a problem, including
what you call as valve issues, including what you call as nerve issues within the heart, including what you call as the uh, Sujan of heart, LVH, left ventricular hypertrophy, any kind of hypertrophy. Or uh, in today's time, what is happening, because you are pushing the water out of the body, everything will start drying up. Your will start drying up. Even the heart muscles can start drying up. Fibrosis. Have you heard this word, fibrosis? We are causing fibrosis of heart, liver. In liver, it is called as liver cirrhosis, muscle fibrosis, and it is increasing. क्योंकि आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हो, इट्स अ क्राइम. It is not treatment, it is crime to push the water out of the body when your heart strength is directly proportional to the water content of your body. Swamiji, Sachin ji is here. He had posted a question earlier that he had a stroke about 3 months back. Should he wait or should he start the treatment? Kumbhak therapy. 3 months बहुत ज़्यादा टाइम होते हैं. Don't wait for the next stroke. Start Kumbhak practices. Do it gently, start gently, and you'll see within few months the chances of further degradation in your system will come down. अभी तो आपको वो स्ट्रोक जिसको भी होता है उसको तो क्या कहते हैं उसे, जो ब्लड को थिन कर, ब्लड थिनर्स पे तो डाल देते हैं. ब्लड थिनर्स का मतलब क्या है? You don't want your body to, you are actually reducing the recovery strength of your body. So by thickening the blood, the process of thickening of blood is basically a recovery factor of your body. आप उसको बार बार अगर कमजोर कर रहे हो तो यू आर एक्चुअली हैम्परिंग द रिकवरी फैक्टर ऑफ योर बॉडी. नॉट गुड. कुंभक इज अ नेचुरल ब्लड थिनर. कुंभक नेचुरल ब्लड थिनर है. Swamiji, we have a question from Pankaj. He's enrolled in the program, but he has a question for you. So, Pankaj, I'm asking you to unmute yourself and ask your question. Yeah. Thank you, Navneet ji, for giving me a chance to ask a question to Swamiji. नमस्कार स्वामी जी. स्वामी जी, लास्ट मंथ ही मुझे हार्ट इश्यूज का चेस्ट पेन वगैरह सब हुआ था. At that time, it was like a symptom for the heart attack, and got conducted those angiography. So 30-40% blockages, multiple blockages है. But right now I'm going through all these issues. So heart rate is always 90 to 100%. So what could be the reason for that, and how can Kumbhak be helpful in reducing these things? You have a vata dosha. Vata dosh है आपको. Vata dosh also means that the pressure ecosystem always keeps fluctuating within the body, and it shows in your thought process also. आपको ना सोचने में भी ऐसा बार बार कुछ सोच रहे हैं, सोचने में Right. अटक रहे हैं, है ना, कुछ छूट नहीं पा रहा. तो ये चीज वात दोष में आता ही है. वात दोष एग्जैक्टली कनेक्ट्स विद द पावर और द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सेलेशन. आपका एक्सेलिंग स्ट्रेंथ अगर कमजोर होगा ना तो वात दोष आएगा ही आएगा. द एक्सेलिंग स्ट्रेंथ इज कनेक्टेड विथ वायु और वात, तो वो आएगा ही आएगा ना. ये आपको ठीक करना ही पड़ेगा वात दोष का, और कोई तरीका नहीं है. नो अमाउंट ऑफ मेडिसिन यू विल बी एबल टू करेक्ट इट. फर्स्ट, देन सेकेंड थिंग, blockages doesn't cause heart attack. अब निकलो इन सब चीजों से. Blockages doesn't cause heart attack. It's been proved beyond doubt that no amount of blockages can cause heart attack. So it is a blood clotting which causes heart attack. So if you don't take any medication and don't do angioplasty, what will happen? Your heart will do natural bypass, and the more collaterals, opening of collateral in your heart makes your heart more strong. Blockages make your heart more strong. So small amount of heart attack
It always happens in a human life. If you try to protect those heart attacks, you lose the life of heart. For a short period of time, if there are blockages, there will be a little difficulty, but it will become fine within few weeks. Now, within that week, if you go towards doing a surgery, अगर आप एंजियोप्लास्टी करवा लो, तो आप 5 साल हार्ट का टाइम कम कर देते हो. तो कुंभक अब क्या है, डर लगता है, बिकॉज देर इज लैक ऑफ स्ट्रेंथ इन द बॉडी, है ना, डर लगता है. तो फिर डर पे किसी का धंधा चलता है ना. आपको स्ट्रांग तो कोई नहीं कर रहा, आपको डरा और रहे हैं. जबकि वो प्रूव हो चुका है कि ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक नहीं होता. कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट अटैक डजंट हैव अ कोरिलेशन एट ऑल. कोलेस्ट्रॉल का हार्ट डिजीज के साथ में कोई कोरिलेशन ही नहीं है. The more cholesterol the body has, the more it has protected you. That means there is risk in the body. Cholesterol is good. इसी की वजह से बच गए आप. कोलेस्ट्रॉल कम करोगे तो खत्म हो जाएगा ये शरीर. तो कितनी सारी चीजें रिवर्स करनी पड़ेगी. डी डॉलराइजेशन, डी कोलोनाइजेशन, डी रेडिकलाइजेशन, डी इम्यूनाइजेशन, डी मेडिकेशन. बहुत काम है, बट आप लोगों को आंखें खोलनी पड़ेंगी. Thank you, Swamiji, for taking out time to answer questions, doing diagnosis of people. Hopefully, many answers would have helped people about how to understand, how to look at blood pressure and heart issues. If we understand the problem correctly, then a right solution is possible. But if you get stuck with something that you don't even understand, and then I do not know what solution we are looking at. So there are many people who have used the program to come out of various conditions